Hello dear students, a very good morning to everyone. In the last class we have discussed about the basic idea of limit, and we discussed about what is left hand limit, what is right hand limit, and what is the existence of a limit, right? Now today we are going to discuss the main topic of chapter, that is called continuity. So to understand the continuity, the basic concept is required, which is limit. We had discussed already, and today's discussion is the continuity. Before going to start the topic, may I know from the students that what actually continuity is? According to me, the continuous means, suppose in terms of mathematics, continuous means, suppose you draw a graph of a function. Continuous function means that is, you are drawing a graph like that, suppose, without lifting a pen till from the beginning to the end of a particular domain. Suppose this is the domain of a function. Okay, in this domain, if in whole domain, if you are not going to lift the pen at any place or any point on the domain, कोई भी एक point में आप पेन को lift नहीं कर रहे हो, उठा नहीं रहा हो, तो आप without lifting the pen you have drawn this particular graph, and such type of function are called what? Continuous function. Means a function is continuous means it is continuous at every point in its domain. जब जितनी भी points है वो सारे point में क्या है, function में कोई break नहीं है. That means if you get, suppose if I consider this is the point, and in this point suppose there is a some break, there is a break of the particular graph of the function, हमें एक break हो गया, then it is called discontinuous at that point, discontinuous at that point. अदरवाइज द फंक्शन इज कंटिन्यूस. तो कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना है, ये फंक्शन को पूरी डोमेन में, डोमेन की एवरी पॉइंट में कंटिन्यूस होना पड़ेगा. दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन थ्रू आउट इट्स डोमेन. ठीक है, वही आपको जानना. दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट द फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन. ओके, नाउ लेट अस से आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में आप एक फंक्शन को कैसे कंटिन्यूस मानते हो, व्हाट शुड बी द, दैट इज ए मेथड यू आर गोइंग टू फाइंड, व्हाट इज द डेफिनेशन एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस. फॉर दिस आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन विच इज एफ एक्स इक्वल टू 1 when x equal to 0 and x less than 0. Means from 0 to, this is from 0 to less than, means for all the real number less than 0 including 0, fx is only 1. For 0 fx is 1, for this value, for this value, for this, for every value fx is what? 1. Fx is what? 1. Okay, and if you connect, आप आपके सारी पॉइंट को कनेक्ट कर ले तो अल्टीमेटली टच द y axis, because for x equal to 0 y equal to also 1. दिस इज़ द ग्राफ. तो हम लेफ्ट से अगर शुरू करेंगे, इट इज़ गोइंग एंड कंटिन्यूसली, देयर इज़ नो ब्रेक इन बिटवीन, दैट इज़ 0 एंड ऑल द नंबर लेस देन 0. ठीक है, नाउ इन दिस पार्ट यू सी व्हेन x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इक्वल टू व्हाट? 2. मीन्स 0 में x का वैल्यू कितना है? 1 है, बट व्हेन इट जस्ट क्रॉस द 0 मीन राइट ऑफ 0, हम एक पॉइंट लिया करो इन दिस पॉइंट और इन दिस पॉइंट, वट एवर बी द पॉइंट, सबके लिए y का वैल्यू क्या है? एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा. एवरी वेयर व्हाट हैपन? इट विल बी 2. ओके, इट विल बी व्हाट? 2 in this way. And if you join it, you are getting a straight line. You are getting a straight line. But very important is that you observe that when x equal to 0, fx is not defined here. Means x अगर 0 हो जाए तो x का वैल्यू, y का वैल्यू 1 होगा, बट इधर आके क्या होगा? दिस पर्टिकुलर लाइन विल नॉट टच द y एक्सिस, और हमें एक गैप रहेगा. हमें क्या होगा? एक गैप रह जाएगी. अंडरस्टूड? मीन्स व्हाट? इफ़ यू गो टू द ग्राफ, कहाँ से शुरुआत देखो, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड टच y एक्सिस एंड गो इन दिस डायरेक्शन, एंड उस पॉइंट में जाके क्या हो, इन डायरेक्शन में क्या हो, क्या डिसकनेक्शन हो गया. दैट मीन्स वो जो ग्राफ हुआ दिस डायरेक्शन एंड इट बिकम्स व्हाट? डिसकनेक्टेड हियर. That means point of disconnection
is, and the domain is what? 0. 0 belongs to what? Domain of the function. Okay, 0 belongs to what? Domain of the function. एंड एट दैट पॉइंट 0 द फंक्शन का जो ग्राफ है उस ग्राफ का क्या हो गया? ब्रेक हो गया. फंक्शन का ग्राफ का क्या हो गया? ब्रेक हो गया. देयर इज अ ब्रेक इन द पर्टिकुलर ग्राफ ऑफ द फंक्शन. सो फ्रॉम दिस बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस मीन्स इट शुड बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट. और कोई भी एक पॉइंट में अगर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. पॉइंट ऑफ व्हाट? डिसकंटिन्यूटी. तो हम x इक्वल टू 0 को क्या मानेंगे? इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. दैट मीन दिस फंक्शन f(x) is discontinuous at x equal to 0. Discontinuous at x equal to 0. मैं कोशिश की. I hope that you understand. Okay. So from the graph it is clear that point 0 is the point of discontinuous. इस ग्राफ का जो डोमेन है, इसको x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट? डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर. रियल नंबर की सारी पॉइंट में कंटिन्यूअस हो रहा है, ग्राफ से पता लग रहा है. बट एट x इक्वल टू 0 व्हाट हैपन? द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. This is called graphical representation. Now how to analytically or mathematically you can show that how the function is not continuous. ठीक है. We know that left hand limit हमें क्या मिला था? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, जो भी पॉइंट में आप लेफ्ट हैंड लिमिट, पॉइंट क्या है? 0 है. तो x टेंस टू व्हाट? 0 माइनस fx. It is the discussion of last class. It was the discussion, we have discussed this left hand limit in the last class. X tends to 0 minus, I have mean you that x is approaches to 0 from the left. लेफ्ट में जितना x है सब सारी जाके x के नज़दीक जा रहा है, तो सारी x क्या होगा? It will be less than what? 0. It will be what? Less than 0. That means x tends to 0 minus means x is less than 0, and x is less than 0 condition is included here. So in that condition, what is the value of fx? It is equal to 1. So limit x tends to 0 minus fx क्या होगा? 1 होगा. And you got in class 11 limit of a constant is constant because it is independent of the variable. So its value is equal to what? 1. ठीक है. This is the left hand limit. तो finally left hand limit is a finite quantity and it is unique number, and therefore left hand limit exists. Now come over to the right hand side, right hand limit. Here right hand limit क्या होगा? This is left hand limit. Now right hand limit is equal to limit x tends to 0 plus. When x is approaches to 0 from the right, at that time what is the value of fx? That is called right hand limit. So x tends to 0 plus fx. Now x tends to 0 plus means x is approaches to 0 from right. राइट से अगर अप्रोच हो रहा है, इसका मतलब है 0 के राइट साइड में जितना x है, all x are x tends to 0 plus. इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है x is greater than 0. सो x greater than 0 कौन सी कंडीशन है? इस कंडीशन है, उस हिसाब से fx का वैल्यू क्या है? 2 होगा. So you can write limit x tends to 0 plus fx means what? 2, and finally you are getting limit of a constant is equal to what? 2. Now you got already left hand limit is 1. Left hand limit is 1 and right hand limit is 2. Both are not same. Both are not same means what? Left hand limit is not equal to what? Right hand limit. No doubt left hand limit individually exists, right hand limit individually exists, and both are not equal. जब both equal नहीं होता है तो original limit भी exist नहीं होता, हमें पता है. तो here from this particular graph we observe that the function is discontinuous at this point, and mathematically we see that left hand limit is not equal to right hand limit. That means what happen? We can conclude that if left hand limit is not equal to right hand limit in a particular point, then what happen? That particular point is called the point of discontinuity. Okay, तो हम ग्राफ अगर
ना ड्रॉ करें, किसी की फंक्शन का ग्राफ ना ड्रॉ ना करके हम पता कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई दैट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज इन दिस केस 0, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. हमें पहला इन्फॉर्मेशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आफ्टर दे आर एग्जिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दे एग्जिस्ट. अगर एग्जिस्ट ना हो तो कंटिन्यूअस तो नहीं होगा, अगर एग्जिस्ट कर लिया फिर दोनों अनइक्वल है, इन सच केसेस व्हाट हैपन, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन. From the last example, we conclude that if left hand limit is not equal to right hand limit in a particular point, the function is discontinuous at that point. Now, let us consider another function, another example I have taken, and this example is what you are see fx is equal to what? 1 when x not equal to 0. Very important thing is that x not equal to 0 means it has two meaning. One is x positive, another is x negative. Both the condition are included in this particular condition, okay, and for x equal to 0 it is 2, functional value equal to what? 2. that means x greater than 0, x less than 0 and x equal to 0, तीनों अगर मिला लो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? it will be the set of real number. That means function is defined for all real values, okay. This condition actually defined for that is a domain, and the value is whatever the values, these are value inside what? Range of the function, inside what? Range of the function. Okay. Now let us draw the graph first. We draw the graph and observe what happened. X less than 0, x greater than 0 included here. So for x equal to 0, what is the value given? For x equal to 0, functional value is equal to only the point 2, only the point 0, 2. x equal to 0, y equal to what? 2. This point. Function का ग्राफ में एक point है. And when x greater than 0 means just greater than 0, here equality is not there, just greater than 0, then functional value is equal to what? 1. Functional value कितना है? 1 है. Then for all the value of x greater than 0, सब के लिए functional value कितना है? 1 है. और सारी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो एक लाइन मिलेगी, and this line is called what? Y equal to 1. This line is what? Y equal to 1. Okay, y equal to what? 1. And see, this line never touch y-axis, never touch y-axis, because at x equal to 0, at x equal, I'm sorry here, little mistake is there. When x greater than what? x greater than 0, fx is equal to 1. 1 इधर है, ठीक है, I'm sorry. This is the graph ऐसे होगा, okay. And when x less than 0, x less than 0 के लिए क्या है? फिर सेम कंडीशन है, fx is what? 1. तो वहाँ से x लेस देन 0 जितना निगेटिव नंबर है सबके लिए भी 1 है, सबके लिए भी क्या है? ग्राफ 1 है. बट व्हाट हैपन, you see, for x greater than 0, in this condition x equal to 0 is not defined. For x equal to there is no value, so ग्राफ इधर क्या होगा? In this particular part क्या है? The graph will be disconnected. Graph will be what? Disconnected. Graph will be what? Disconnected. Because what happened? For x equal to 0, function is not defined here. Okay. But for x equal to 0, there is a point defined, which is an extra point, not on the line. So line अगर हम इधर join करें, ultimately what happened? If you see domain की सारी positive number के लिए आपका range क्या है? This is the graph. Again here disconnected, this is the graph, and again an extra point, this combination of these two, ultimately the graph of the function is this one, okay. And in this graph you see at that point the graph, what happened? A break is there. ग्राफ में क्या है? एक ब्रेक मिला है, और ultimately we can say that at x equal to 0 the function is discontinuous. ये डोमेन के अंदर जो पॉइंट है उसमें क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया. फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया. ठीक है. सो दैट्स वाई फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. ओके, ग्राफिकली वी प्रूव दैट द फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन. तो फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा? इट इज़ कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इस डोमेन. डोमेन में अगर कोई एक पॉइंट मिल गया
वहाँ में फंक्शन अगर कंटिन्यूस ना हो तो यू कैन से दैट इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन. सो यू कैन से दिस फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन एंड इट इज डिसकंटिन्यूस एट व्हाट पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, दिस इज व्हाट 0. पर अदर पॉइंट में देखो क्या है, कंटिन्यूस है. अदर पॉइंट में क्या है, कंटिन्यूस है. 0 पॉइंट में कंटिन्यूस नहीं है. तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखें मैथमेटिकली क्या होता है. लिमिट x टेंस टू व्हाट 0 माइनस, like previous problem x tends to 0 minus means x is less than 0 and x less than 0 means x is less than 0 means it is a number not equal to 0. okay, नेगेटिव नंबर हुआ 0 से इक्वल नहीं होगा तो उस कंडीशन यूज़ कर सकता हो. एफ एक्स का वैल्यू 1 है एंड फाइनली लिमिटिंग वैल्यू इज़ व्हाट 1. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू व्हाट 0 प्लस एफ एक्स और एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0, राइट. x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x नॉट इक्वल टू 0. x टेंस टू 0 प्लस मीन्स व्हाट, x is greater than 0 and again you put fx is equal to what 1 because x greater than 0 means what, x is not equal to 0 and for this fx is equal to what 1 and finally you can write this is also 1. Here you see left hand limit is 1 which is finite in fixed quantity, therefore left hand limit exists individually, right hand limit also exists individually and both are equal. Left hand limit is equal to what, right hand limit. In previous problem we see that if left hand limit is not equal to right hand limit then function is discontinuous at this point. But here you see left hand limit is right hand limit, still equality होने के बावजूद भी function क्या है, इस point में discontinuous हो गया. That means what happen, you cannot say that a function is continuous at a point. एक फंक्शन अगर कोई भी एक पॉइंट में कंटिन्यूस होना है तो ये कंडीशन काफ़ी नहीं है. दिस कंडीशन इज़ नॉट स्टिल सफिशिएंट. इक्वलिटी होने के बावजूद भी क्या है, डिसकंटिन्यूस दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स दो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाए तब भी आप कह नहीं सकते द फंक्शन आर व्हाट कंटिन्यूस. फंक्शन आर व्हाट कंटिन्यूस. तो कंटिन्यूस बनने के लिए कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करना होगा. पहले तो नॉट इक्वल होने से तो कंटिन्यूस नहीं है, फिर इक्वलिटी हो गया फिर भी कंटिन्यूस नहीं है, तो और कुछ तो ऐड करना है, कुछ ना कुछ तो नया चीज़ ऐड करना होगा. इसके बाद हम कह सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो दिस फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू व्हाट 0. स्टिल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. नाउ व्हाट वी विल डू इन दिस केस, we will do something reform in the function definition. फंक्शन की डेफिनेशन में थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे. उसकी डोमेन के ऊपर फंक्शन का जो डोमेन डिफाइन किया जाएगा, ये x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए मैं फंक्शन का वैल्यू इस 2 ना दे के 1 दे दूँ. सपोज आई एम टेकिंग इट इज़ 1, व्हाट विल हैपन, अंडरस्टैंड. इफ x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज फंक्शनल वैल्यू इज ऑल्सो 1. x नॉट इक्वल टू 0 के लिए 1 भी है, x इक्वल टू 0 के लिए 1 भी है. देन यू सी वन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू व्हाट 1, ये 1 हो जाएगा. तो ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ क्या होगा, इधर आगे y एक्सिस में कनेक्ट होगा, इट विल बी कनेक्टेड एंड इधर आके y एक्सिस में कनेक्शन होकर क्या होगा, एक कंटिन्यूटी मेंटेन होगा. यू सी इफ़ यू ड्रॉ द ग्राफ यू सी देयर विल बी नो ब्रेक. आप पेन को लिफ्ट नहीं कर रहे हो, सीधा एकदम उस डोमेन की इस साइड से उस साइड तक जा रहा हो विदाउट एनी ब्रेक. therefore this function is continuous. this function is graph tell it is what कंटिन्यूस. अभी x इज इक्वल टू 0 पॉइंट में फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया. अर्लियर क्या था, इट वाज दैट इज डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. ओके एंड हियर यू सी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, एज अर्ली लेफ्ट हैंड लिमिट 1 होगा, राइट हैंड लिमिट 1 होगा, दोनों इक्वल होगा. एंड अनदर कंडीशन यू ऐड f ऑफ 1 फंक्शनल f ऑफ 0 आई एम सॉरी फंक्शनल वैल्यू एट 0, जो जिस पॉइंट में हम चेक कर रहे हैं functional value at this point is equal to what, also 1. That means from here we can conclude that left hand limit is equal to right hand limit is equal to f0. f0 means what, functional value, function का जो value at that particular point is defined, exist, it is also exist. यार इट इज़ एग्जिस्ट मीन्स उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है. x इक्वल टू 0 में फंक्शनल वैल्यू क्या है, 1 है, और ये जो एग्जिस्ट वैल्यू है वो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का क्या है, इक्वल है. इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय ए फंक्शन इन ए पर्टिकुलर पॉइंट देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस. फंक्शन इज कंटिन्यूस कौन सी पॉइंट में, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0.
अदरवाइज इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी बनने के लिए क्या होना है, एक फंक्शन क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना है इंडिविजुअली, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना है, एफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट डिफाइन होना चाहिए, एंड ऑल दीज थ्री मस्ट बी इक्वल, एंड इफ इट इज सो देन यू कैन शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। हमने पहले एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से ग्राफ में ड्रॉ किया, पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकाला, उसमें मैथमेटिकली क्या होती है हमने टेस्ट की, and finally we conclude that a function is continuous at a particular point, very very important particular point in the domain of the function if left hand limit and right hand limit and f0 all are equal, provided all are exist, means ये भी exist होना है, ये भी exist होना है, ये भी exist होना है। अगर f0 का वैल्यू अगर exist नहीं करता, नहीं दिया गया है, अगर फंक्शन में हम x = 0 डिफाइन नहीं करें तो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। So finally, what should be the conclusion that when a function is continuous at a particular point? Now I am going to write the definition. Definition हम लिखेंगे, a function is continuous function f is continuous at a point x equal to a in the domain of the function if, what is the condition, left hand limit means limit x tends to a minus fx equal to limit x tends to a plus fx इक्वल टू व्हाट, एफ है, इक्वल टू व्हाट, एफ है। ठीक है, देन वी कैन satisfy provided all are exist. This is the very beautiful definition. A function is continuous at a particular point. Okay, in the last class we have discussed if left hand limit exists, right hand limit exists, when both are equal then original limit exists. What the उसका original limit क्या है, origin दोनों मिला के original limit होगा limit x tends to a fx, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा is equal to f है। तो this is also the definition of a function to be continuous at a point. But why we have used this and why we have used this, कब हम ये यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंड कब ये यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन क्वेश्चन इज गिवन दैट शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट दे दिया और आपको कहा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंडिविजुअली उसको भी टेस्ट करना होगा, उसको भी टेस्ट करना होगा एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं, एंड देन एंड इफ सपोज एन आर्बिट्री नंबर और आर्बिट्री पॉइंट यू टेक इन ए डोमेन, डोमेन में कोई भी एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट में आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो आर्बिट्री पॉइंट में, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, यू हैव टू यूज़ फॉर्मूला, प्लीज़ राइट दिस, दिस इज़ फॉर चेकिंग द कंटिन्यूटी, check at arbitrary point and this is for what? Particular point. Particular. This is for what? Particular point. And this is for particular point. This is for arbitrary point. Okay. So I just give the definition of continuity. तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट टू से, क्लास में मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं आके कह दिया कि ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इफ दिस एंड स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आप लोगों को कोई बैकग्राउंड नहीं मिलता और प्रॉब्लम सोल्यूशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती। तो डेफिनेशन क्या है, व्हाई वी हैव यूज दिस डेफिनेशन, हाउ दिस डेफिनेशन कम, because all these examples I have given and from this example I have derived this particular formula and from here previous concept जो लिमिट का है, लिमिट से हम उसको मिल गया है। ये भी है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट बट यू हैव टू यूज दिस formula for the continuity, to check the continuity at an arbitrary point.
तो हमें क्या है, ए फंक्शन कब कंटिन्यूस होती है, व्हेन इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, एंड व्हेन इट इज़ कंटिन्यूस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, it is left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function, means functional value at this particular point, provided all three are exist. ये तीनों अगर exist हो जाए तो function continuous होगा. ठीक. So next class में we will solve few arbitrary functions are there, few fixed function are there, like a constant function, identity function, polynomial function. These function are continuous or not, we have to check it. Okay, and then we will start to solve the questions of different type. Okay, thank you very much. Hope that you understand and have a good day ahead.